So let's continue our lecture. Okay, so right now discuss continuous time complex exponential signal. Let's find out if we have such type of signal in discrete time, then what are the possibilities of the behavior of the signal with respect to time. So now we are going to talk about discrete time complex exponential signals. So discrete time complex exponential signals. Mathematically, how can we denote the representation? So there are two representations that we can use for discrete time complex exponential signal. So we have again constant, we are using the same symbol C, but now I'm going to use the notation that is used in the book, and that is alpha raised to the power n. This is one representation, mathematical representation of discrete time complex exponential signal. And in this representation, as before, C and this alpha in general are complex numbers. And what is the alternate form? We can also represent discrete time complex exponential signal in this form. C e raised to power j beta into n. And if you compare these two forms, this one and this one, you can find out the relationship जो alpha हम use कर रहे थे. So actually alpha is equal to e raised to power beta. So sometimes we will be using this form and sometimes we will be using this form. But both of these are mathematical representations of discrete time complex exponential signal. So let's find out what are the possible सर ई पावर behaviors. जे बीटा नहीं होगा? नहीं, let me see कि मैंने कहाँ mistake कर दी है. I made a mistake somewhere. Okay. Yes, ये mistake है. Okay. Thank you for correcting me. यहाँ पे J नहीं है. Sorry. क्योंकि J का मतलब है कि फिर तो हम एक स्पेशल केस की बात कर रहे हैं. ठीक है. So this is general form. यस सर. ठीक है. अब ठीक हो गया. Yes. So let's talk different possibilities. So पहली जो फॉर्म है या पहला जो केस है अगेन इसको हम कहते हैं रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स. सो डिस्क्रीट टाइम में रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स का मतलब क्या होगा कि C and alpha are real. Okay. So in this representation, I'm referring to this one. इस रिप्रेजेंटेशन में अगर C भी एक रियल नंबर है और ये जो अल्फा है ये भी एक रियल नंबर है, इससे जो सिग्नल हमारे पास आएगा उसको हम कहेंगे रियल एक्सपोनेंशियल. और लेट्स फाइंड आउट कि रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स का बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो सकता है. So if the magnitude of alpha is
greater than 1, then, and if magnitude of alpha is less than 1, then. So what is the answer? If this alpha is a number such that its magnitude is greater than 1, so what type of behavior this signal will show? Any idea? Increasing. Yes, same behavior जिसको हमने कहा था Exponential, yes sir, exponentially increasing. growing exponential signal. और इसमें क्या हो जाएगा? Decay. Decaying Decreasing exponential. exponential. और इट्स बेटर कि हम इसको ग्राफिकली भी देख लें सो दैट वी डोंट मेक एनी मिस्टेक कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की हम बात कर रहे हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस मैं n को शो करूंगा एंड एज बिफोर n इज अ डिस्क्रीट नंबर. सो मेरे पास अगर एक ये सिचुएशन है सो वी हैव ए डिकेइंग सॉरी ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल. सो मेरे पास तरह का सिग्नल समथिंग लाइक. ठीक. और अगर मेरे पास decaying exponential की हम बात कर रहे हैं with respect to discrete time, so it means we have something like this. सर ये एनालॉग भी हैं सर. Yes, we are Discrete not analog. yes we are not right now हम इसको फिलहाल continuous time और discrete time के point of view से देख रहे हैं without Yes, sir. thinking कि इसका जो amplitude है क्या वो continuous नहीं उसमें है scale में है या discrete है. वो एक डिफरेंट वो है. इस वक्त हमारा फोकस ये है कि इसका बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है. ठीक है. तो ये आपके पास अगर आपके पास अल्फा का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है और ये आपके पास अगर अल्फा का मैग्नीट्यूड लेस देन. सो इफ यू लुक एट दिस इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि अल्फा का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है. सो अगर अल्फा की वैल्यू 2 है, लेट्स से 2 है, सो वी हैव सी 2 raised to power n है. सो अगर c की वैल्यू ऑफ कोर्स आप कुछ भी ले सकते हैं 1 ले लें तो यू कैन क्लियरली सी कि जैसे जैसे आप n को बढ़ाते जाएंगे सो यू गेट 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 to power 3, तो इट इज ग्रोइंग. अल्फा लेस देन 1 का मतलब ये है कि मे बी अल्फा इज 0.5 के बराबर है. सो c 0.5 raised to power है. तो इसमें जब आप n को इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका एम्पलीट्यूड जो है डीके करता जाएगा बिकॉज 0.5 raised to power 2 is 0.25 raised to power 3 और भी कम होता जाएगा. ठीक है. There is another thing that we need to consider for discrete exponential signals. इस वक्त हमने इसको amplitude wise कर दिया है कि इसका magnitude 1 से बड़ा है या छोटा. अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो इसका क्या फर्क पड़ सकता है. मैं इसको लिख लेता हूँ. What if alpha is negative? आपके ख्याल में क्या डिफरेंस हो सकता है इसका. सिग्नल के बिहेवियर में क्या फर्क पड़ जाएगा. सर ये जो चाहे मैं दोनों की बात करूं लेकिन अगर इसका मिरर मैग्नीट्यूड इमेज होगा लेकिन अलोंग एक्सिस ये एन एक्सिस जो है आपने ड्रा किया है मतलब नीचे की तरह इससे बढ़ेगा. मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों केस में अगर अल्फा का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 हो या अल्फा का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 हो, अगर तो अल्फा नेगेटिव हो इट मींस कि इस एग्जांपल में अगर ये अल्फा -2 हो और इस एग्जांपल में अगर अल्फा -0.5 है तो इसका मतलब है कि अल्फा नेगेटिव है. आपके ख्याल में क्या फर्क पड़ेगा. फर्क नहीं पड़ मिरर इमेज बन जाएगा सर. मिरर इमेज होगा बन जाएगा. यही रिड्यूस. ये सर अलोंग एन एक्सिस मतलब नीचे की तरह ऐसे लाइंस होंगे. सारी लाइन नीचे हो जाएंगी. आपका मतलब है कि इस तरह हो जाएगा. Yes, मैं sir. इसको प्लॉट कर रहा हूँ Flip हो कि आप जाएगा. इस तरह हो नो जाएगा. सर. Yes, sir. सर वीडियो इन पर डिपेंड करेगा. जी नो सर इन पर डिपेंड करेगा. एन पे डिपेंड करेगा. यस सर.
क्या डिपेंड करेगा? इसको जरा फर्दर एलोबरेट करें. व्हाट डू यू अगर वांट? सर एन अगर ऑड इनका होगा तो वैल्यू नीचे होगा, एन इवन होगा तो ऊपर होगा। सर अगर और इन even इवन behavior हो तो फिर ऊपर होगा। ओके. और अगर ऑड हो तो नीचे होगा। नीचे होगा. सो इसका मतलब है कि आंसर क्या Yes. हुआ कि जो सिग्नल की जो वैल्यूज हैं दे विल अल्टरनेट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक. Yes, sir. और जो आपने कहा कि इवन के लिए पॉजिटिव होगा और नेक्स्ट वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा तो नीचे हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि मैं अगेन इसी यहाँ पे ही बना लेता हूँ कि अगर इसकी एक वैल्यू लेट्स से कि ये इवन वाली थी, ये ऊपर हो जाएगा. नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो लेट्स से कि वो नीचे की तरफ हो जाएगी. फिर नेक्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है, फिर नेक्स्ट वैल्यू नीचे की तरफ होगी, फिर ये होगी. तो इसका जो बिहेवियर है, अगर तो नेगेटिव है और उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है तो इट इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल. उसका ओवरऑल बिहेवियर अभी भी वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये है कि सिग्नल जो है उसकी वैल्यूज अल्टरनेट कर रही हैं बिटवीन पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू. अगर अल्फा का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है और लेकिन नेगेटिव है तो बिहेवियर अभी भी डिकेइंग होगा. डिफरेंस क्या होगा कि अल्टरनेट करेंगी, एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, दूसरी वाली नेगेटिव, फिर पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव होगी. लेकिन ओवरऑल जो बिहेवियर है वो क्या होगा? डिकेइंग ये होगा अगर तो इस कंडीशन को फुलफिल कर. So this is something that you need to take into account while describing the behavior of discrete time real exponential signals. अगर तो ये तो हमने दो केसेस ले लिए विच आर इंपॉर्टेंट, बट इफ अल्फा की वैल्यू एग्जैक्टली 1 के बराबर हो तो फिर क्या होगा? अल्फा की वैल्यू एग्जैक्टली 1 के बराबर है, फिर क्या होगा? कांस्टेंट सिग्नल कांस्टेंट सिग्नल होगा। constant signal. Yes, the signal will not be growing or decaying. It will be a constant signal, and the level of the signal will be decided by this constant C. So this is a third possibility. Now, second category of discrete time exponential signal is if beta is purely imaginary. So x of n is equal to c used to power, again beta को हम ले लेते हैं as before, some kind of a constant, and let's pure imaginary, so let's assume j omega naught. So j omega naught n हो जाएगा. And now इस सेकेंड केस के लिए मैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल की ये फॉर्म यूज कर रहा हूँ. ठीक है. दैट इज व्हाई मेंशन कि मैं समटाइम इस फॉर्म को हम यूज करेंगे, समटाइम फॉर आवर सिंप्लिसिटी हम ये फॉर्म यूज करेंगे. इस वक्त मैं ये फॉर्म यूज कर रहा हूँ और अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो बीटा है ये प्योरली इमेज. इसको आप अल्फा के साथ भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि मैंने अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप आपको बताया हुआ है कि इस फॉर्म में और इस फॉर्म में जो डिफरेंस है वो डिपेंड करता है कि क्या मैं अल्फा यूज कर रहा हूँ या ई टू पावर बीटा यूज कर रहा हूँ. सो बेस्ड ऑन दैट आप ये भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये जो बीटा है अगर प्योरली इमेजिनरी हो जाए, जो अभी मैंने लिया हुआ है जे ओमेगा नॉट हो जाए, इसका मतलब ये है कि अल्फा जो होगा एक ऐसा नंबर होगा कि जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर होगा. तो यहाँ पे अगर आप इन टर्म्स ऑफ अल्फा अगर आप बात करें, जब बीटा प्योरली इमेजिनरी होगा इसका मतलब है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा 1 होगा. तो यहाँ पे जो मैं सेकंड केस ले रहा हूँ कि बीटा को प्योरली इमेजिनरी ले रहा हूँ, इसका इन टर्म्स ऑफ अल्फा क्या मतलब है कि मैं अल्फा का मैग्नीट्यूड रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि ये 1 ही होना चाहिए. So this is one and the same thing because of the relationship between alpha and beta, जो कि already मैं पहले भी बता चुका हूँ. Now let's focus on this type of a signal. सर ये पिछला पेज थोड़ा दिखा है. This one. सर
सर पर इससे पहले आपने बताया था कि अल्फा अगर 1 के बराबर हो तो कांस्टेंट फंक्शन होगा, तो फिर तो कोई मकसद नहीं हुआ। कहाँ पे? इससे पहले ये देखो सर, लिखा है ये रेड कलर के ऊपर है, आपके ख्याल में, अल्फा अगेन लेट मी पॉइंट आउट, जो आपकी क्वेश्चन में एक फंडामेंटल फ्लॉ है वो ये है। आपके ख्याल में ये और ये, क्या ये दोनों सेम थिंग है? तो सर यस, सो दैट इज आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है सर, समझ ठीक हो गया। गया? यस सर। ओके, नाउ ये जो सिग्नल हमारे पास आ गया है, जिसमें हमने बीटा को अज्यूम कर लिया कि अगर बीटा प्योरली इमेजिनरी हो तो हमारे पास ये सिग्नल बन गया। ठीक है, ये जो सिग्नल हमारे पास आ गया है, इसको हम अगेन, मैं सी को जस्ट फॉर सिंपल नोटेशन, लेट्स अज्यूम कि सी जो कांस्टेंट है मैंने इसको 1 ले लिया। ठीक है, so I get a signal which is like this, e to power j omega naught. अब ये जो मेरे पास सिग्नल आ गया, we will talk about its behavior in more detail in a short while, but right now I am going to relate this signal again to a signal जिसको आप लोग साइनोसाइडल सिग्नल कहते हैं। So what I am saying is कि ये जो सिग्नल मेरे पास आया, it is closely related to sinusoidal signal. In other words, there is no difference between this signal and a sinusoidal signal. So discrete time में अगर मेरे पास एक sinusoidal signal हो, इसको हम इस तरह जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं, some constant and then cos, then we have omega naught n plus phi. So this is the general mathematical form of a sinusoidal signal. And what I'm saying is these two signals are closely related. And again, why I'm saying they are closely related, so you already know the mathematical background. These two are related because of Euler's relationship. We can always write this signal in terms of cos and sine, and we can always write cos in terms of this signal. So that is why I'm calling them closely related signals. So whenever you have an exponential signal in this form, it is the same thing as sinusoidal signal because of this Euler's relationship, जो already हम continuous time में मैं detail में बता चुका हूँ, but that concept is equally applicable to discrete signals, so I don't want to go into too much details. What is important for us to know is, और again मैं पहले एक और चीज कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ। So let me draw this so that we have clear idea कि हमारे पास अब discrete time में एक sinusoidal signal अगर हो, so how it will look like. So this is how a discrete time sinusoidal signal will look like. Okay. So right now we have looked at the real exponential signals, which have a behavior either growing exponentially, decaying exponentially, or under this third case it remain constant. And now we have talked about another possibility that exponential signal can give us a behavior like sinusoidal signal, which look like this. And just to come to the third possibility, and then again यहाँ पे एक चीज जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैंने पीरियोडिक नेचर की कोई बात नहीं की हुई। कंटिन्यूअस टाइम में जब मैं इस सिग्नल की बात कर रहा था, तो वहां पे मैंने क्या कहा था, इस सिग्नल के बारे में मैंने क्या कहा था, इस तरह का जो सिग्नल था जो कि डिस्क्रीट टाइम में इस तरह, सॉरी कंटिन्यूअस Periodic. टाइम में इस फॉर्म, इस सिग्नल को मैंने कहा था कि ये पीरियोडिक, ठीक है। और Yes, फिर sir. मैंने कहा था कि
तो हमारे पास कंटिन्यूस टाइम में साइनोसाइडल सिग्नल भी है, वो भी पीरियोडिक है, तो ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक। इस वक्त मैंने पीरियोडिक नेचर को बिल्कुल डिस्कस भी नहीं किया। यू विल फाइंड आउट इन अ शॉर्ट वाइल कि व्हाट इज द रीजन, मैं क्यों पीरियोडिक नेचर को, पीरियोडिसिटी की कोई भी बात नहीं कर रहा, उसका रीजन क्या है। वी विल कम टू दैट इन अ शॉर्ट वाइल। पहले मैं इसको थर्ड स्टेज को कंप्लीट कर लेता हूँ कि हमने जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी जो थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसको हम नाम देते हैं जनरल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। सो ये केस हमारे पास कब आएगा, व्हेन बोथ सी एंड अल्फा आर complex numbers. So C भी complex number है. So let's represent the complex number by its polar form. And similarly, alpha is also a real number. Let's also represent the alpha by its polar notation. So we have magnitude of this, and then we have phase of this. So now the original signal जो हमने general representation दी थी, वो ये थी C alpha raised to power n. इसमें हम C और alpha को substitute कर लेते हैं. So alpha को मैंने यहाँ पे substitute कर लिया. This is alpha. So it is substituted over here. So we have alpha magnitude raised to the power n and then e raised to power j omega naught n. We can rearrange this. Like this. And again, by making use of Euler's relationship, this function can always be written in terms of sine and cosine. So what we get in the final form, this is the amplitude factor जो हमारे पास है. So x of n is equal to the magnitude of c, the magnitude of alpha is to power n, and then we have cos of omega naught n plus theta plus j, magnitude of c, magnitude of alpha is to power n sine omega naught n plus theta. So this whole function, by making use of Euler's relationship, we get this. So now the question is, what is the nature of this signal? We need to look into. So again, what will be the behavior of this signal? That will be very much dependent on this value, alpha. So if alpha is equal to 1, then if magnitude of alpha is greater than 1, then if magnitude of alpha is less than 1, then. So now you can answer this question. If alpha magnitude is less than 1, so what type? साइनोसाइडल होगा. Yes, then sinusoidal होगा. Yes, correct. और alpha का magnitude greater than 1 है तो क्या होगा? Growing exponentially sinusoidal. Yes, growing. I will call it growing sinusoidal signal. इसको मैं short form में लिख लेता हूँ, but we know कि इसकी जो sinusoidal signal जो है, उसकी growth जो होगी वो exponentially होगी. और अगर alpha का magnitude less than 1 है तो decaying sinusoidal signal. So by going through the continuous time exponential signal, you can see that this behavior is exactly similar जो हम continuous time complex exponential signal का देख चुके हैं. So there is no difference.
नाउ कमिंग टू द पॉइंट जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया पीरियड, था, यस सर। पीरियड की बात करते हैं. लेट्स कम टू दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट दिस पॉइंट विल बी लेटर ऑन. इसको जब हम फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे वहां पे भी इसका बड़ा यूज होगा. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट क्लियरली. सो periodicity properties of discrete time complex exponential signals. Now, I mentioned in my first lecture that during this whole course, we will talk about discrete time signals and continuous time signal in parallel. And we will observe that there will be many similarities between the behavior of discrete time and continuous time signal. But at times, you will also observe that there is some difference in the behavior of a signal in continuous time and discrete time. So till now, जो अब तक हम जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा था, ये जो बिहेवियर अभी आप लोगों ने बताया, इसको अगर आप कंटिन्यूस टाइम टॉपिक में चले जाएं तो आप देखेंगे कि वहां पे भी यही बिहेवियर था. हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज थी और उसका ताल्लुक मैग्नीट्यूड के साथ. यहाँ पे जो इस वक्त पीरियोडिक प्रॉपर्टी को मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. डिफरेंस कहाँ पे है, मैं यहाँ पे इसको एक लेट्स से लेट मी पुट अ लाइन. सो कंटिन्यूअस टाइम में हमने जो एक सिग्नल पढ़ा जिसको हमने कहा कि ये पीरियोडिक है, वो क्या सिग्नल था? इट वाज e⁻ j ओमेगा नॉट t. सो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें वो टाइप जो कि पीरियोडिक है वो ये वाला है, ठीक है. लेकिन जब मैं डिस्क्रीट टाइम में इसी किस्म का मेरे पास सिग्नल था, ऑफ कोर्स मैथमेटिकली डिफरेंस ये है कि उसमें अब t के बजाय स्मॉल n आ गया है क्योंकि ये डिस्क्रीट सिग्नल है. और ऑलरेडी हम फर्स्ट लेक्चर में इसको कर चुके हैं कि कंटिन्यूस टाइम के लिए हम t यूज करेंगे, डिस्क्रीट टाइम के. लेकिन इस सिग्नल की पीरियोडिक नेचर को मैंने डिस्कस नहीं किया था. द रीजन इज के दिस सिग्नल कैन और कैन नॉट बी पीरियोडिक. दिस सिग्नल कैन और कैन नॉट बी पीरियोडिक, एंड इन अ शॉर्ट व्हाइल यू विल नो कि किस बेस पे मैं ये कह रहा हूँ. बट वी ऑलरेडी नो कि ये जो सिग्नल है इट इज ऑलवेज पीरियोडिक. दिस सिग्नल इज ऑलवेज पीरियोडिक. और क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस इस वक्त हम देख सकते हैं वो ये है कि this signal is periodic for any value of omega. Let me write it down. Periodic for any value of omega naught. इस signal में omega naught, whatever value you think of, you substitute it over there, and if you again find out whether for this particular value of omega naught this signal is periodic, you will find out that it is always periodic. This is one observation that you can make about this signal, that it is periodic for any value of omega naught. Even if omega naught is 0, it is still periodic signal. एक तो ये बिहेवियर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं. दूसरा, अगर हम ओमेगा नॉट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो आपके ख्याल में क्या फर्क पड़ता जाएगा? जी, what is going to happen if you increase omega naught? टाइम पीरियड कम होता जाएगा. t Time is equal to 2 pi by omega naught है. वो कम होता जाएगा. लेकिन सिर्फ अगर आप इसके बेस के ऊपर आंसर देंगे तो क्या कहेंगे? सिग्नल को what is happening to the signal if you keep on increasing सिग्नल omega naught? सर एक्सपोनेंशियल डिप्रेस होगी सर. क्या होगा? फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ेगी सर ना. यस, तो आप इसको आप कहेंगे कि उसकी ऑसिलेशन, रेट ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगी ना. तो फ्रीक्वेंसी का ही यही मतलब है सर. ये सर ओमेगा रेट ऑफ नॉट, ऑसिलेशन. ओमेगा नॉट increase
oscillation will be means increase in rate of oscillation. oscillation. If you keep on increasing omega naught, आप even infinity तक चलते जाएं, omega naught बढ़ता जाएगा. For every different value of omega naught, you will get a different periodic signal and it will have a different frequency. This is the behavior of this signal. Now let's come to this discrete time signal. और also it's also important कि इस signal को फिर आपने sinusoidal signal के साथ भी relate करना है. ये जो बातें हमने की हैं ये equally valid हैं इन दो signals के बारे में भी, because of the close relationship between this signal and sinusoidal signal. And Yes, sir. whatever comments I am going to make about this signal, they are equally applicable to sine omega naught n and cos omega naught n, because these two signals are closely related to this. Okay, let's come to the difference. So जिसकी वजह से मैंने periodic nature को discuss नहीं किया था. Let's consider इस एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं. Let's assume कि मेरे पास एक सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है और एक और सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी है e to the power j ओमेगा. इसकी फ्रीक्वेंसी मैं लिख लेता हूं ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई. I just want you to compare these two signals. Okay, एक सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, एक और सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई. तो इन दोनों सिग्नल को डिफरेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. डिफरेंट होना चाहिए, यस, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है. इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है और इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई है. सो वट एवर वी हैव सेड अबाउट कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के, जिस तो मैं आपको कह रहा था कि आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये सिग्नल पीरियोडिक होगा और वो डिफरेंट होगा पहले वाले से. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट यू विल गेट डिफरेंट पीरियोडिक सिग्नल. बट लेट्स चेक दिस फॉर दिस पर्टिकुलर केस कि व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने एक सिग्नल लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, इररिस्पेक्टिव कि ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, उस ओमेगा नॉट में मैंने 2 पाई ऐड कर दिया है. और अब इस सिग्नल को मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, इस सिग्नल को मैं जरा फर्दर इससे लिख सकता हूँ e to power j ओमेगा नॉट n e to power j 2 पाई. What is the value of this thing? 1. It is always equal to 1. So what you get? You get e to power j omega naught n, which is the same thing as e to power j omega naught n. So what conclusion can you draw from this analysis? आप क्या कहेंगे कि ये सिग्नल और ये सिग्नल क्या है? इक्वल है. इक्वल हैं या सेम है? Yes, There is no difference between this signal and this signal, which is a totally different behavior जो कि continuous time में हमें ऐसा कुछ behavior नहीं मिल रहा. अब ये जो मैंने सिर्फ 2 पाई की बात की है, अगर आप यहाँ पे इवन आप ले लें -2 पाई ले लें, आप +4 पाई ले लें, आप -4 पाई ले लें, ये जितने भी सिग्नल्स हैं all of them are same as e to the power j omega naught. So based on that discrete time exponential signal जो हम इसको बात कर रहे हैं, इसके बारे में एक पॉइंट तो हमें ये पता चल गया कि जब आप कोई भी फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ उससे कितना आगे जाना है, ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई.
इस रेंज में ही आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल मिलेंगे। 2 पाई के बाद ये सिग्नल दोबारा से अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा। So what I'm saying is signal with frequency omega naught is identical to the signal with frequencies omega naught minus plus 2 pi, omega naught plus minus 4 pi, and so on. So we only need to consider an interval of length 2 pi. To choose a unique omega naught. So as I mentioned कि इस वक्त इसको मैं ओमेगा नॉट कह रहा हूँ, लेकिन आप जो भी फ्रीक्वेंसी, लेट्स से कि आपने यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर ली है, now you need to move up to the interval of 2 pi. ये जो 2 पाई है और यहाँ जो आप जहाँ से आपने स्टार्ट लिया है ये सेम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ से दोबारा से ये रिपीट करना शुरू हो जाएगा, फिर 4 पाई के बाद दोबारा से रिपीट करना शुरू हो जाएगा। सो वी ओनली नीड टू फोकस दिस इंटरवल whenever we are dealing with discrete time exponential signals like this. एंड समटाइम्स इस वजह से जब हम ओमेगा नॉट की मैं बात कर रहा हूँ कि या तो हम इस इंटरवल में ओमेगा नॉट को कंसीडर करेंगे, एंड इट्स आल्सो पॉसिबल कि हम इसको माइनस पाई से प्लस 2 पाई भी कंसीडर, प्लस पाई, so this also 2 pi interval. So sometime we will use this interval and sometime we will use this interval, but the idea is कि 2 pi से बाहर हम नहीं जाएंगे। एक तो ये डिफरेंस हमारे पास आ गया, ठीक है। अनदर डिफरेंस जो आपको नजर आएगा बिटवीन दिस सिग्नल कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट, वो है जो मैंने कहा था कि इस केस में जब आप ओमेगा नॉट को इंक्रीज कर रहे थे, जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे थे, रेट ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज करती जा रही थी। सो दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू अप टू इंफिनिटी, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैव द सेम बिहेवियर फॉर दिस सिग्नल। इस केस में जब हम ओमेगा नॉट को बढ़ाएंगे, सो एक खास वैल्यू तक बढ़ने तक इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी, और जब दोबारा उससे फर्दर आप बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। दिस इज समथिंग जिसको मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा, बिकॉज आई हैव लेस देन 1 मिनट। आल्सो आई जस्ट नीड टू टेक 10 मिनट्स, थोड़ी ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। सो 4:15 हो रहे हैं, 4:25 पे मैं फाइनल सेशन स्टार्ट करूंगा इस क्लास लेक्चर का, ठीक है। और सर अगर ये कंटिन्यूअस में 2 पाई आ जाए तो फिर उसमें नहीं होगा वो सर, वो तो वही बात है। मैं दोबारा से जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है सर, मिनट ठीक बाद है इस सर। पॉइंट को मैं फर्दर एलोबरेट कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो सी यू आफ्टर ठीक है 10 सर। मिनट्स, ओके। ये बताओ उसके